Good morning, Ajay Kumar sir. Am I properly audible? ये आवाज आपको ठीक से आ रही है? Good morning, sir. Your voice is quite clear, sir. Okay. Now I'll just put presentation. Give me confirmation about presentation, please. Sure, sir. Sure. First, sir, we will have a group song for welcome song, and then we will just start. No. This is trial. Trial to check Okay. presentation is visible. Okay, Just sir. give me a second. Please. Sir, दिख रहा है presentation? Yes, sir. Yes, sir. It's coming. Okay. Thank you so much. Now you can. I will mute myself and you continue. You tell me when I am should start. That's all. Nothing. Thank you. Okay, thank you, sir. Hello. अब्दुल अजीज सर, कैमरा थोड़ा डाउन कीजिए, बच्चे दिखाई दें उसमें. Yes. So since it's 10:30 and people are joining, as per the schedule, welcome song will be there first, and then we will start our formal program, that is Regional Level Science Congress 2021. So Aziz sir, I request you to please present the welcome song. अनम्यूट करना है सर पहले. Thank you, sir.
The welcome song presented by the choir group of JNV Kachar on the occasion of Regional Level Science Congress 2021 inauguration function. Please welcome to the girls of JNV Kachar at Regional Level Science Congress with welcome Please. song. Please. सूर्य से सूर्य मिला के आए मंगल का सूर्य से सूर्य मिला के आए मंगल का हृदय में प्रेम लिए करके स्वागत सम्मान सूर्य से सूर्य मिला के आए मंगल का सूर्य से सूर्य मिला के आए मंगल का देख लगे हैं ठीक है आइए After this melodious song, now the program is over to AC sir and Shri Abhijit sir. Over to Abhijit sir. Thank you, Abdul Aziz sir. I feel surprised
impressed and jealous also because I can't do means such good singing, and the boy was playing the instrument very well. And now we start our formal program. Abhijit sir, I request you to means kindly start recording. Abhijit ji. Sir, I'll start in a minute, sir. I'm using my system. Okay. So then we will start. You after that you please means whenever it is convenient you start recording. So dear friends and colleagues, today we have with us Dr. Santosh. He is a scientific officer G in Government of India, and I don't have too much words to say because he has a lot of things in his name. He has 24 years of professional and academic experience, and he's means serving the society with so many causes. He has environmental concerns. He is doing water literacy among the people, tree plantation, science communication, so many social activities. And above all that I find very much attractive, he is promoting the innovative thinking among our young minds and the scientific temperament also. He is helping the people who are looking for UPSC, and he has visited almost all the country, as he himself mentioned, except Ladakh. Lakhs of students benefited by his experience, his words, and he has also given startup guidance to the people. And another area of his interest is personality development. And when the academic part is concerned, the difficult thing is parenting, because all of us means our students are in the residential system. So he is also giving the parenting tips to the parents, and he has a big means very lengthy resume kind of thing. If I start doing it, we can take the whole session discussing that. So limiting my words, I would request our honorable guest for the day, Dr. Santosh, to please address the students and the JNVs, those who are listening to him. It's a good number, sir. In the meeting, it is showing 50, but you can see the students are attending the program. And I request all the attendees to please maintain the discipline, and your questions will be taken up when the sir finishes the topic. Over to Dr. Santosh, sir. Welcome, sir. Please. Thank you very much, sir. Thank you so much. I hope I'm properly audible. Please confirm that. And the presentation. Yes, sir. Yes, sir. You are. Yeah. Thank you so much. Yes, sir. I love to keep that video part off from my end because the presentation is already there. You can go through that as slowly we will be gradually going towards the going through the lecture. So I hope you don't mind my request. You will agree that. And let's get into the today's session. Sir. Now, JNV Navodaya Vidyalaya is like a family to me. Now, this is something really general statement people must be making when they are visiting to you. But it's not with same with me. I visited Northeast, I visited Car Nicobar, I visited all the states, union territories, going through the various schools, including JNVs, and the experience at JNV was remarkably totally different and was quite inspiring and really interesting. So let's start this session with a formal end from my side. I'm delighted to address the Navodaya Vidyalaya family on occasion of Regional Level Science Congress for year 21-22. My greetings to the NVS management, all commissioner sirs, principal sirs, teachers, staff, students of all 93 plus JNVs of Northeast India. I know everybody is interested in joining, but network issues exist in our plain area. When in terrains it exists, then there is nothing new. This particular session, as sir said, is recording, then probably this will be useful to you. So let's get into the further. Particularly at starting node, I must appreciate vision and visionary action to put up the foundation for establishing these schools with a robust framework in creating value-based knowledge inputs to the higher education system of the nation and the world.
These are words are not based on the something theoretical copy paste phenomena taken from the internet, but it is my own experience when I visited 110 number of JNVs all around India, and experience जो वहां पे मिला उससे यही पता चला कि जब भी जाओ प्रिंसिपल सर अवेलेबल होते हैं, और वो और उनके स्टाफ और स्टूडेंट इतने इंथुजियास्टिक होते हैं कि आप जो भी बोलो आपको इच्छा होती है, अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं मुझे अच्छा ही बोलना है, क्योंकि इतने सारे अच्छे बच्चों का, अच्छे टीचर्स का मैं समय जाया नहीं कर सकता। जब ये इनविटेशन मुझे मिला, आफ्टर डिस्कशन विद डिप्टी कमिश्नर सुरेश सर ऑफ आरओ शिलोंग एंड असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स अजय कुमार सर, मैं सोच रहा था कि बोलूं क्या एग्जैक्ट। सब होनहार लायक बच्चे हैं, सारा साइंस टेक्नोलॉजी बहुत हद तक उनको पता ही होगा। अभी भी मैं जो बात कर रहा हूँ या एजम्पशन पे चल रहा है कि आपको सबको, आप कहीं भी हो हिंदुस्तान में, भारत में, आप सबको हिंदी अच्छे से आती है। दैट्स द ग्रेट कल्चर। ओके, तो ये जो आपको हिंदी आती है मैं उसका थोड़ा फायदा उठाऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरी जो बात है वो आपको समझे। हिंदी इंग्लिश मिक्स बात करूंगा। तो जब मुझे सर लोगों से बात हुआ और मैं सोच रहा था कि क्या बोलूं, तो मेरे दिमाग में मेरे पिछले एक्सपीरियंस से ये आया कि फॉर्चुनेटली बोथ ऑफ अस मतलब मैं, इंडिविजुअल एंड अ जेएनवी फैमिली एज अ वन सिंगल एंटिटी, इन दोनों का एक कॉमन विजन है, और वो है इनकलकेटिंग साइंटिफिक एंड इनोवेटिव थिंकिंग कपल्ड विथ वैल्यू सिस्टम ऑफ बाय प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जहां पे एजुकेशन की प्रदीर्घ व्याख्या मतलब डिटेल्ड एनालिसिस आज हम करेंगे। मैंने गाइडलाइन लेने की कोशिश की सर लोग से, बट उन्होंने मुझे बोला आप बोलिए, नॉर्मली आप जो बोलते हो काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो जिम्मेदारी मेरी है बोलने की, और बोलने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो सारी जिम्मेदारी मेरी। कुछ अच्छा लगा तो अजय सर को, सुरेश सर को आप थैंक यू बोल सकते हो। वैसे आज के इंटरेक्शन आई विल बी मेकिंग ऑन दिस टॉपिक जो आपके सामने स्लाइड में है और आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि आप स्मार्ट रूम में बैठे हो। तो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, इसको हम यूज करेंगे फॉर बिल्डिंग इनोवेटिव एंड इवॉल्व माइंड्स। अभी आपने डार्विन का इवोल्यूशन सुना, अभी ये इवोल्यूशन, अच्छा काफी लेट से रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, नेटवर्क का इफेक्ट देख रहे हैं ना। तो आपको आगे जाके पहला इनोवेटिव काम ये करना है कि देश के कोने कोने में फिजिकली जाने के लिए सड़कें बननी चाहिए अच्छी, तो आईटी टेक्नोलॉजी से नॉलेज डोमेन हर बच्चे के पास पहुंचने के लिए नेटवर्किंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये पहला असाइनमेंट आज का आप लोगों के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि आज का टॉपिक ये है, तो इनोवेटिव आपको बनना है 100%, और आप उसके लायक भी। अगर मैं बोलूं कि जहां 300 से 600 700 का स्ट्रेंथ एक स्कूल में है, और वहां से एक 30-35 बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पूरे इंस्टीट्यूशन को, तो यू आर दी गुड। अभी ये मैं तारीफ आपकी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे बारे में बाद में अच्छा बात करें। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूं, एंड आई पर्सनली फील दैट something which is of utmost important already exists in this infrastructure. Something which कोई नहीं my, नहीं है ना my सारे सर लोग, सारे मैडम लोग याद रखिए कि Sorry to intervention. Others, please mute. आई विल आस्क रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल मैडम, सर, स्टाफ, आपसे गलती हो सकती है कि आप माइक गलती से ऑन करेंगे, तो माइक पे ध्यान रखिए और वीडियो पे, तो माइक आपसे गलती होगी। आपको, आप अनुशासन प्रिय लोग हैं मुझे पता है, बट देन दिस मिस्टेक्स मे बी लिटिल ट्रबल्स। आज थोड़ा थेराटिकल, बहुत सारा प्रैक्टिकल चीज हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें जो ऑलरेडी इनोवेटिव, क्यूरियस, इंटेलिजेंट, हार्डवर्क, डिसिप्लिन स्टूडेंट है आपके, जो मेरे सामने बैठे सुन रहे हैं, उनको बगैर बोर किए मुझे उनको आज कुछ समझाना है। मेरा रोल क्या है? द फर्स्ट स्लाइड itself is a clear. You just have to have the guidance to lead you in a direction until you can do it. आज आप जहां हो, there are a lot of things which doesn't support you in the right spirit, जो probably some mega city या some IT some tremendously plains area में होगा। ये कोई आपके साथ हुई जाती या तकलीफ नहीं है। These are the adverse conditions। जैसे हम बोलते हैं ना, एक कार्बन का काला स्वरूप होता है, कार्बन का दूसरा स्वरूप हीरा होता है। दोनों का फर्क यही है कि एक एडवर्स कंडीशन से पास होते होते, सहते सहते डायमंड तक तब्दील होने तक रुका रहा। So you are into, suppose by mistake, some adverse conditions. What you need is everything at a desktop with the help of internet.
what you need is a proper guidance till date, जब तक आप अपने आप को गाइड न कर सके, और ये नॉर्मली स्कूली पीरियड में होता है. So this is what my role is, Ajay Kumar sir role, principal sirs, teachers role. So today they have told me, sir please you take the baton and lead us. तो अभी यहाँ एक important चीज है, not to be absolutely certain is, I think, one of the essential thing in rationality. अभी आपके ऊपर जो मैं डायरेक्शन आपको देने जा रहा हूँ, उसमें आप इमीडिएटली मन ही मन में मेंटली यू मस्ट हैव रिस्पॉन्डेड यस सर. मोस्ट ऑफ द टाइम we don't understand really which path to follow when we really love certain things. So this is where what is important is rational, logical and तर्क सुसंगत. हिंदी शब्द, सॉरी मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे हिंदी थोड़ी अच्छी आती है ऐसा लोग बोलते हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, मराठी मीडियम वर्नाकुलर स्कूल में पढ़ा हूँ. सो यहाँ रैशनल मीन्स तर्क सुसंगत, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो चीज है वो अगर आप करोगे, then probably your all confusions in choosing the right direction for yourself, society and probably humanity will be able to do some good work. Now life is not about who you once were और कब आपने क्या किया, कब आप सही थे. It's all about identifying your own inner potential and start working. अभी नीचे जो लिखा है कि भाई ये सारी आपके अंदर की कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को यही लगता है कि गाइडेंस. इसलिए देखिए, whenever we talk about the culture of Indian subcontinent, we give lot of respect to guru. This word guru is actually teacher, counselor, guide, and that guiding role I am going to play. So today I am not going to be great teacher or best teacher, because whatever and whoever is teacher, if he has come by his own liking to the profession of teaching, then he just want to bring out the best in student. आपके अंदर जो ऑलरेडी इतनी अच्छाई भरी है विद स्किल, ओके, ये सारी चीजें हमको आपको सही डायरेक्शन में लाने में मार्क मदद करने के लिए चूज किया गया. सो व्हाट इज टुडेस सेशन? दो इट मे बी लिटिल बोरिंग, बट मैं थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक पे बात करूंगा जो will be spending very important period of your life in the process of education. अभी आप बोलेंगे मतलब सर, तो भाई 15 साल तो आप पढ़ेंगे ही डिग्री से पाने के लिए, ग्रेजुएशन की, क्योंकि पहले पुराने जमाने में पीपल यूज टू कॉल लिटरेट इलिटरेट, पढ़ना लिखना आना न आना. नाउ इट इज समथिंग रिलेटेड टू द ग्रेजुएट और नॉट लिटरेट. सॉरी, दिस इज नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, बट कुछ ऐसा ही है. तो अगर मैं आपको बोलूं कि टुडे वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, इट्स नॉट सो लेंथी. 15 years of getting graduation degree is related to the certificate, not necessarily to the knowledge, and the knowledge based समझदारी जो आपके अंदर आएगी, समझबूझ जो आपके अंदर आएगी, उसको शायद इतने साल नहीं लगते हैं. नहीं तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो दुनिया के लिए गाइडिंग पोस्टर कैसे बनते. तो यहाँ हमको एजुकेशन की सही व्याख्या समझनी है. फिर हमें साइंटिफिक टेम्पर के बारे में, जो मैं आज बहुत जोर देने वाला हूँ इनोवेटिव थिंकिंग के लिए. मैं नहीं, सरकार भी जोर देती है, तभी तो हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं और हर बार कुछ थीम रखते हैं, तो उसकी बात वहां करेंगे. थोड़ा एक मराठी में इसको सिंहावलोकन बोलते हैं, मतलब लुकिंग बैक व्हेन यू हैव ट्रैवल्ड सम पीरियड ऑफ योर जर्नी. आपको पीछे मुड़ के एक बार देखना है कि कहां से कहां तक आए. ये हम करेंगे अपने साइंस की हिस्ट्री इन पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ड एंड इंडिया. देन एजुकेशन रोल इन साइंटिफिक टेम्पर, एंड फाइनल स्टेज कि सचमुच इवॉल्व माइंड के लिए, इनोवेशन के लिए, आपको दुनिया के लिए यूजफुल होने के लिए क्या ये साइंटिफिक थिंकिंग जरूरी है. सो यहाँ एजुकेशन को आपके लिए डिफाइन कर दिया, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. आप सबको मालूम है, मोस्ट ऑफ अस इफ वी थिंक फ्रॉम टुडे टू द पास्ट, मम्मी डैडी से बात करोगे, टीचर्स से बात करो, किसी लेवल से एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नॉलेज टू एक्वायर सम स्किल, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड हैबिट्स. एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग. That is what people did in a Gurukul, Madrasa, mission school. Even till date, education system has got 80% content which is a knowledge base. Okay. In between, when people understood that educated, skilled manpower is essential for the automation and industry to make money, capitalistic world,
ये जो भांडवलशाही वाली दुनिया है, इसमें इन्होंने एजुकेशन को भी इंडस्ट्री बना दी। उसमें पैसे आने लगे, लोग लाखों रुपए लेके सीख क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, बट सर्टिफिकेट जरूर पा रहे। दैट होल टर्मिनोलॉजीज आर चेंजिंग नाउ। Today you don't have to run here and there, give 1,000 rupees of donation or lakhs rupees of donation because government schools are reformed. 90 plus students are thinking of getting connected to the single line and have some discussion on science. It's something first step, not you can say the direct representative example of that. So if new future education is not only physical upbringing, it's something like a distance upbringing by the knowledge base which is freely available. तो आपको ये समझना जरूरी है क्या बेसिक एजुकेशन की व्याख्या यहाँ पे एड्रेस हो रही है। बोलोगे कौन सी वाली सर? वो acquiring the knowledge, giving the exam, getting the good marks. I will say no. The basic definition of education is written here just for you कि मैं बोलूं और सपोज नेटवर्क सही नहीं है और आपको सुनाई ना दे तो यहाँ लिखिए, education is not the mere process of gathering a knowledge, it's a training of mind to think scientifically, that is related to the innovation, science, technology, scientific temper. But there is some other side of the coin, and that is thinking ethically, and that is religious adhyatma. And those who say these two things are separate are actually mistaking that though both the things are actually one if you take everything in a right speed. So today's date we redefine, or at least for your understanding आप समझिए, इसके बाद कभी भी आप कोई भी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हो, you will be understanding that education is a training of mind to think scientifically. So what is scientific thinking? The big definition is written here. I'll just summarize it. I will say it is a using of scientific methods and evidences to make the logical decision making is scientific thinking. इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, बट ये आपका काम है. Now I have written word children, but I personally believe that not you, not sir, not madam, not principal sir, not commissioner, everybody we die till that we are students. So all of us are in the phase of learning how to think. The day you start your journey how to think, probably you will start your journey to the innovativeness and your curiosity will be properly fueled. So, यहाँ जो लिखा है what to think क्या है? What to think is very simple. Now my own exposure to the northeast culture is very less. मेरा खुद का नॉर्थ ईस्ट के रेगुलर डे टू डे बेसिस के कल्चर से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा, बट जो मुझे मालूम है उससे इतना तो पता है कि प्लेन्स में आप कहीं जा रहे हो और कहीं भी बिल्ली रास्ता काटे तो लोग 5 कदम पीछे जाते हैं. आप उनको पूछो तो एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बट भाषण जरूर देंगे. एंड दिस थिंकिंग कम्स इन अ व्हाट टू थिंक कैटेगरी. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स अराउंड यू जहां पे आप ऐसी चीजें करते हो जो नेचर का, इंसानी सभ्यता को चोट पहुंचाती है, बट फिर भी वो लोग करते रहते हैं बिकॉज दैट इज कमिंग सिंस ईयर एंड सिंस एंशिएंट पीरियड. तो ये जो व्हाट टू थिंक कैटेगरी में विदाउट साइंटिफिक हम मूव करते हैं, इस चीज को हमें जल्द से जल्द रोकना है, तो ही हम हमारे कदम इनोवेटिवनेस की तरफ या साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ बढ़ा पाएंगे. तो यहाँ पे when I am connecting scientific temper to the innovativeness, making you curious, making you adventurous in the domain of science and technology and research, then I am telling you that searching a new domain of knowledge is a scientific attitude. Not accepting anything without the scientific evidences or proof or test is the scientific temper. Having ability to change one's own stand. हो सकता है कि मैं कभी कुछ स्टेटमेंट बोलूं जो साइंटिफिकली उस जमाने में उस रेफरेंस में सही हो, एंड द नेक्स्ट रेफरेंस सिस्टम इट मे बी डिफरेंट. आई विल गिव यू वन एग्जांपल. यू नो आइजैक न्यूटन and then Huygens wave theory of light. I know many of you. So when we talk about the particle nature or when we talk about the wave nature of light or electromagnetic, or this particular electromagnetic radiation which falls in the light category, visible category of spectrum, यहाँ पे दो चीजें हैं. एक ने दूसरे की बात काटी नहीं, दूसरे ने पहले की बात काटी नहीं, दोनों ने एक्सेप्ट किया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बाद में आगे जाके ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट प्रूव हुआ.
तो ये जो है कि जो प्रूफ के साथ है उसको मैं एक्सेप्ट करते वक्त इमोशनल एडामेंसी या रिलीजियस बायस बीच में नहीं लाऊंगा, इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, नॉट टू रिलाई ऑन प्री कंसीव्ड नोशन इन ल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड एविडेंस। अभी सामने सूरज उगता है, दिखता है, तो जमाने ने बोला कि भाई पृथ्वी जो है उसके सूरज चक्कर लगाता है, एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। उस जमाने में ये सही था क्योंकि उसके एविडेंसेस नहीं थे। आज एविडेंस से हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रूव हो गया, फिर भी लोग, अगर आप इस तरीके की चीजें इंटरनेट पे ढूंढना चालू करोगे तो विल फाइंड hundreds of forums discussing flat earth theory, hundreds of forums discussing geocentric model of solar system। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। थेरी यही है कि आपको साइंटिफिक बेस्ड थिंकिंग में जाना है। फायदे क्या है? फायदे यही है, आप अपने जिंदगी में रैशनल मतलब लॉजिकल तर्क सुसंगत चॉइसेस कर पाओगी जो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोन हो। आपको जैसे टुडे sir may be expecting that I should talk on the nuclear energy, space technology, some advances in medical technology, some isotope preparation. Obviously, we can talk in a due course of time. But today, suppose you are here around 3,000 students, and you want to choose. Somebody wants to be nuclear scientist. Somebody wants to get into the cosmology. Somebody wants to be astronomy enthusiast. Somebody wants to be a medical professional. Somebody wants to work on some X-ray, and lot of fields exist. But suppose he does that choice by just mere his will and infatuation. You understand infatuation? बचपन में ना बड़ी सारी चीजों से प्यार होता है। ओके, मुझे ऐसा बचपन से ही लगता था कि इंस्पेक्टर बनना। क्यों? क्योंकि मुझे ये चोर उचक्के बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये लगता है, बहुत सारे लोगों को बचपन से ही लगता है कि वो एस्ट्रोनॉट बन जाए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मॉडल बने या फिल्म स्टार बने। तो ये इन्फेचुएटेड है। ओके, आई डोंट नो आप लोग हिंदी मूवीज देखते होंगे। गुड्डी नाम की एक मूवी थी जया बहादुरी की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि बच्चों को इन्फेचुएशन किस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके का इन्फेचुएशन हम सबको होता है। बट जब जिंदगी के चॉइसेस की बात आती है तो वी हैव टू डू थरो स्टडी। इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड वी स्टडी फॉर अ ईयर एंड देन अपीयर फॉर एग्जाम। सेम इज एप्लीकेबल टू द एवरी एग्जाम एंड दोज हु आर सिंसियर serious they keep studying throughout life so that someday sometime they have to appear for some exam. आई होप यू आर लाइक। तो ये सारी चीजों में जब हम तैयारी करते रहते तो जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मे बी 10th, मे बी 12th, मे बी ग्रेजुएशन, जब डिसीजन लेने जा रहे थे तो क्या हमको इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट नहीं करना चाहिए, चॉइस इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए? ये होता है व्हेन यू फॉलो द साइंटिफिक एथिक्स। तो यहाँ मैं आपको बोर नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, ये सारी चीजें इंडियंस का, भारतीय नागरिकों का फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी आप सिविक्स में पढ़ते हो, सो लेट्स गो फर्दर। इतनी जरूरी चीज, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिया और डेवलपिंग नेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एवरी ह्यूमन। ओके, एवरी ह्यूमन फिर भी मिसिंग है। यू विल नॉट फाइंड, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि औषधासाठी, मतलब दवा के लिए भी आपको साइंटिफिक टेम्पर लोगों में मिलेगा। जबकि सुबह से लेके शाम तक और पैदा होने से मरने तक वी कीप यूजिंग साइंस, नॉलेज टू द साइंस एंड साइंस टू द टेक्नोलॉजी। ज्ञान से विज्ञान आया, विज्ञान से तंत्र ज्ञान आया, और आज हमारे आसपास जो भी चीज है सिर्फ विज्ञान के और वैज्ञानिक सोच की उपज है। फिर भी इफ वी आर नॉट एबल टू, सर एक रिक्वेस्ट थी अजय सर, मैं सही बोल रहा हूँ ना? हिंदी इंग्लिश मिक्स सही चल रहा है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, ओके। सो इफ वी आर गोइंग डायरेक्शन, हम यही यूज करते हैं, तो व्हाई दैट लाइन ऑफ थिंकिंग इज नॉट इन लाइन विद द साइंटिफिक थिंकिंग? And sometimes people think it's a crime, okay, moral crime to question which is wrong, but written in some religious books, not religious books of some utmost importance, but some any what you can say appendix आप समझते हो ना? कोई एक किताब है तो किताब के 15 रेफरेंसेस होते हैं, उस रेफरेंसेस में 15 और रेफरेंसेस लिखे रहते हैं। ऐसे दूर के किसी रेफरेंस के रिश्तेदार के बारे में भी आप बोलो कि यहाँ एकदम ही गलत चीज लिखी है, तो लोगों की भावना हताहत हो जाती है। दे गेट इमोशनली सेंटिमेंटली हर्ट, which is not correct when we live in a diverse country like India. So
इतना सब कुछ रैशनल थिंकिंग के बारे में बोलने के बाद आप सोचोगे कि सर मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ना तर्क सुसंगत होना, लॉजिकल होना, वो वही बात करना जो सही मायने में साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है, करेक्ट। बट व्हेन वी टॉक इट टू द एप्लीकेशन टू द कॉमन मैन एंड कॉमन फोरम, जब हम आम और जनरल पॉपुलेशन की बात करते हैं, जो यहाँ बच्चे हैं जो इतने इनोवेटिव और इंटेलिजेंट है, उनके रेफरेंस में मैं अगर बात करूं तो ये स्टेटमेंट आई थिंक सम सिमिलर टाइम पीरियड ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन और बर्नार्ड रसेल, इनके ये स्टेटमेंट मैं मेरे लेक्चर में यूज करता हूं। यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड यू विल फाइंड सर आप अभी जो बोले उसके उल्टा बोल। आई नेवर मेड वन ऑफ माई डिस्कवरीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैशनल थिंकिंग, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही कहा। ओके, do not fear to be eccentric in an opinion, for a very every opinion now accepted was one eccentric। मतलब मैं इतनी देर तक सपोर्ट करता रहा कि सब कुछ तर्क सुसंगत चलना चाहिए। डे टू डे लाइफ में जहां हम पुराने जमाने से आते हुए अब हमको जो एकदम डिटेल्ड साइंटिफिक एविडेंस वाला नॉलेज है उसको आम जिंदगी में लाते हैं, तो हमें रैशनल होना। बट जब यहाँ का 11th का 8th का 9th का बच्चा सोच रहा है कि सर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, क्या मैं साइंस एग्जीबिशन में या फिर किसी साइंस कांग्रेस में या फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में इसको प्रेजेंट करूं, देन हियर नाइदर यूर फ्रेंड्स, नाइदर टीचर्स, नाइदर प्रिंसिपल, नाइदर सम XYZ संतोष टकले शुड कम एंड से तुमको तो इतना भी नहीं समझ में, ऐसे थोड़ी होता है। दैट ऐसे ही थोड़ा होता है जब मैं बोल रहा हूँ किसी के लिए, तो मैं सामने वाले को थोड़ा इसेंट्रिक क्रैकपॉट समझ रहा हूँ कि इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसे फेकुगिरी करता है। Even I also speak in the same language sometimes after some irritation, okay? But then you know if you are putting right effort in some direction, probably it is not going to harm if it does not have any unethical element. Ethical element है, scientific सोच है, तो आप आउट ऑफ बॉक्स जाके सोच सकते हो। यही ये पर्टिकुलर स्लाइड विद टू स्टेटमेंट बोल रहा। लेट्स गो फर्दर। आज जिस मकाम पे हम खड़े हैं इंटरनेशनल फोरम को अगर आप पढ़ते होंगे तो वी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन सर्चिंग लाइफ ऑन सम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मार्स से लेके हम जाएंगे मित्र, रिगिल सेंटर तारे तक और पूरे ढूंढेंगे कोई है क्या। ऐसे अब तक हजारों हजारों प्लैनेट आर ऑलरेडी हंटेड डाउन बाय केपलर प्रोब व्हिच मे हैव प्रोबेबल हैबिटेबल जोन, जहां पे जीव वगैरह हो सकते हैं। बट ये सब करते वक्त आर वी रियली having common sense in our thinking which comes by the scientific thinking? Are we really protecting life on earth, or are we are spending so much of money in making some arsenals, matlab weapons, biological, chemical, nuclear, so that actual existing life on the so beautiful blue dot in this galaxy and universe get killed? तो क्या हमें लॉजिकल थिंकिंग इस मामले में नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। आप बोलोगे सर बट कंपटीशन तो होता ही है ना, इफ सम नेशन वांट्स टू कम्पीट विद सम अदर नेशन तो वो टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी विद इन माइंड दैट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यू नो स्वामी विवेकानंद जी, he said education has got only sole intent of चरित्र निर्माण। इंग्लिश में इसे कैरेक्टर बिल्डिंग बोला जाता है। and the build character, properly groomed character, मतलब जिसका चरित्र का अच्छा निर्माण हो चुका हो, that person, that human will always work for the betterment of mother earth, जिसको बोलते हैं वसुंधरा का कल्याण। अभी ये सारी चीजें फिल्मी नहीं है। This is what is India and this is what is our Sanskriti, and that is why some great philosopher from the West, East have said that इंडिया इज ए क्रेडल टू ह्यूमैनिटी। मतलब इंसान उसके भाग्य का विधाता, सॉरी, अगर इंडिया पूरे दुनिया के सामने एक सभ्यता का सही मायने पालना, मतलब नर्सरी है जहां पे इसकी उसका निर्माण हुआ, तो वो इस कारण। तो कंपटीशन इज द लॉ ऑफ जंगल, जहां आप मार धाड़ से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसको ताक लाठी उसी की बहस से चलते हो। बट कोऑपरेशन इज द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। If we all go hand in hand together, achieving universal brotherhood is possible and achieving world peace is possible. And you should hunt down that, really speaking, scientific thinking, innovative thinking, your curiosity should be in that direction. Whole of Indian government works on that.
You know, 1928 year was the great for the India's scientific achievement and appreciation by the world. What was it? You all know. ये जो मैं बोलने वाला हूँ, ये साइंटिफिक एविडेंस, एक जस्ट गिव मी सेकंड, मेरा माइक का कुछ इशू, sorry. So what I am telling you, when we have some national science congress or regional science congress or some science exhibition, you know, the sole intent is that younger generation, youth who are the builders. Builders मतलब बिल्डिंग नहीं बनाओगे आप पूरे देश के भविष्य का, मानवता के भविष्य का जो निर्माण करोगे, ये जो यूथ है आप, the youth will be, if having scientific thinking, having proper understanding of ethics and proper understanding of universe, then probably you will be able to contribute not to your bread and butter, not to your family or society. You will be contributing to the whole of the universe. इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जो लिखा है, ना मैं पढ़ूंगा ना मैं आपको पढ़ने की तकलीफ, ये आप देखेंगे जब आप इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे वीडियो द्वारा. What today I am going to tell you is National Science Day celebrated in the name of Dr. C.V. Raman has got lot of inspirational data contained. Just imagine 1928, 1930 he got the Nobel Prize for the Raman effect for his greatest discovery. What is it? Simple. If you see the sky is blue, if you see the Andaman Nicobar or Lakshadweep or any of the beautiful places, Northeast do not have coastal lines, but then probably any of the so beautiful coastal lines India has, you will find the color of sea is deep blue. Now, when C.V. Raman was moving from India to the London, probably he didn't waste his time in religious rituals. He kept thinking since his so early days to reaching to the London, that why these things keep happening. One of them is the color. Already there was existing some effect which was talking about some scattering of the light or wavelength and change in the wavelength. But Raman effect is the effect which has given identification to the weak effect in the intensity of 1 into 1 lakh. अब बोलोगे मतलब क्या सर, 9वीं 10वीं के बच्चों के हिसाब से बोलिए. तो 9वीं 10वीं के बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट भी किसी भी एलिमेंट पे, मोलिक्यूल पे, कंपाउंड पे गिरती है, तो गिरने के बाद भाई वो इंसिडेंट बीम में जो वेवलेंथ होगी उसमें जो चेंज आएगा, वो एक तो वहां से उसने कुछ उठाया तो एडिशनल मतलब बढ़ी हुई चीज, या किया तो भाई उसने जो लूज किया उसका सब्ट्रैक्टेड करके जो आया वो, ये चेंज जहां तक है सबको पता. ये दोनों के बीच में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बीच में जो टोटल डिफरेंस आया, ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस इंसिडेंट बीम फोटोन उसकी जो वेवलेंथ एनर्जी है उससे एसोसिएटेड नहीं है. जिससे ये इंसिडेंट हुआ, जिसपे ये इंसिडेंट हुआ, जिसपे वो टकराया, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को ये रिफ्लेक्ट करता है. ये जब ढूंढा गया तो किसी ने उनको अप्रिशिएट किया, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि ये 1 लाख में एक इतने तरीके से इंटेंस बीम का फर्क दिखाता है. बहुत ही वीक इफेक्ट है. उन्होंने उस जमाने में ये ढूंढ के निकाला. ये एक बहुत ही काबिले तारीफ इवॉल्व साइंटिफिक माइंड की डिस्कवरी, इसलिए आई हैव यूज्ड द स्टार्टिंग स्टेटमेंट ऑफ इवॉल्व माइंड. ये इवॉल्व माइंड सोच के आता है, मेहनत से आता है. गाइडेंस की जरूरत है, बट रमन इफेक्ट के लिए उनको कोई गाइडेंस नहीं मिला था, वो खुद से सोच रहे थे. इसलिए मैं बोला गाइडेंस की तब तक ही जरूरत है जब तक आपको सही मायने में खुद को कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मैं अभी खुद को गाइड कर सकता. सो व्हेन ही डिड दैट, यू नो व्हाट इज बायसिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. पहले तो वो फर्स्ट इंसान थे जो एशियन थे जिन्होंने साइंस में नोबेल पाया. दूसरे वो पहले नॉन वाइट थे जिन्होंने साइंस में नोबेल पाया. टू द एक्सटेंट इंडिया को अभी इंडिपेंडेंस मिला ही नहीं था, और ये सारे चक्कर के चलते भी उनको अप्रिशिएट किया गया. ये बहुत बड़ी बात है. इसके सामने आपके जिंदगी में जो छोटी मोटी तकलीफें है ना, नेटवर्क नहीं है सर, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इट्स नथिंग. So if you understanding adverse conditions can be helpful sometime. So what he did, and you will be shocked to know, 2013 American Society of Chemical Engineers has celebrated Raman effect as the chemical landmark of the century. Physics का effect, chemical engineers of the most developed countries celebrating
in the name of one person who has given effect almost 100 years back. Almost, huh? I'm not going giving exact calculation of 92 or 95 years like that. तो आप समझ रहे हो, डिस्कवरी के लिए सोच चाहिए, मेहनत चाहिए, थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, बट जो बहुत सारी चीज है वो आपके अंदर से आनी है. इफ इट इज लाइक दैट, then you have to do the introspection. What CV Raman did is the lively example. आज अगर मैं बोलूं कि मेरे फिंगरप्रिंट का पैटर्न आपके फिंगरप्रिंट से अलग है, मेरा रेटिनाल पैटर्न आपके रेटिनल पैटर्न से अलग है, तो मेरी एक सिग्नेचर है. संतोष टकले को कहीं भी दुनिया में पहचानना है तो फिंगर स्कैन और रेटिनल स्कैन इज इनफ. Can you believe that everything in this world has got some universal, unique signature which can be recognized by the Raman effect? The Raman handheld cameras of few lakhs are identifying explosives, are identifying the narcotic elements like a cocaine, drugs. They are identifying the plastic explosive. They are identifying everything. Everything in this universe can be recognized with the help of handheld Raman camera. So now you understand what is the starting, what is the middle age of innovative work, and what is the final outcome. Today, nobody in world can deny that C.V. Raman had done great contribution to the science and technology and humanity. So if you are ready for that, then let's go further and understand why these themes are there. These themes are given by government after deep thinking, 1999 to 2011. In case you have read it, in case you haven't read it later, you will just go through and you will see that this is about science, spreading the science, making and celebrating the events and the fields of science which are touching the common human life. Go to the second slide and just see. Since 2014, it's on some different line. Fostering scientific temper, science for nation building, then future of science technology and its impact on education skill. Now we are talking about at the end sustainable development and science and technology in sustainable development. Means first decade almost it was working on spreading science, popularizing science, making people understand the importance of science, making them feel that science is friend and it's not foe or enemy. Now we are trying to change the mindset of the people, the thinking background of the people by fostering scientific thinking, not only science as a knowledge, not as a science as a technology. We are touching up thinking part. We are building nation with the science and scientific thinking. We are telling that the science and technology need to be used to make people understand that conserving nature is important because war may be profitable, but peace is really, really precious and valuable. You know what is happening around world just upside up India. तो ये जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप जैसे बच्चों को अभी से जिम्मेदार बनते हुए टेक्नोलॉजी का विकास करते हुए ये जरूर समझना है कि आपकी टेक्नोलॉजी का विकास इंसानी सभ्यता और मदर अर्थ के बेनिफिट में होना चाहिए. What is sustainable development? You know, when you are using natural resources for your presence and your technological growth by some innovative, curious thinking, you should not damage any of the natural resources or methodology to the extent so that the future generations will feel little handicapped. मतलब फ्यूचर जनरेशंस की मेथोडोलॉजी को और उनके नेचुरल रिसोर्सेज के यूसेज को कोई भी हानि या आपदा न पहुंचे, इस तरीके से फ्यूचर के ऊपर काम करना मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर इंश्योर करना. I know this is a bit difficult for your younger generation to understand. So let's get into the word of science and technology. अभी से मैं वादा करता हूं मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं बोलूंगा, मैं आपको सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा जो चित्र वाली होंगी. What is this? You know, this is a timeline of Earth. अगर मैं यहाँ से कुछ पढ़ना चालू करूँ या बड़ा करूँ तो this circle represents the origin of Earth. Now suppose this is the starting phase. After the Earth you have prokaryotes, then oxygen generating करके करते करते. I'll not go into the detail. Don't bother. If 4.6 billion years is the age of Earth and solar system, then just imagine now I'm zooming in with something where I'm going to touch upon the human's existence.
460 crore years में ये orange brownish strip is showing you the time period for which the human beings are existing since their primitive time. Maybe ape. What is this period? Maybe around 50, 60, not more than that lakhs. 50-60 लाख साल पहले इंसान का इस पृथ्वी पे जो अस्तित्व आया, यहां से हम सोच सकते हैं कि वर्ड के साइंस नॉलेज डोमेन की बात करें या थोड़े दिमाग बेस्ड थिंकिंग, ब्रेन बेस्ड थिंकिंग की बात करें तो शायद यहां शुरू होगी. आई एम नॉट डिमीनिंग एनी ऑफ द डॉग और एनी ऑफ द raven or crow. They are also intelligent. Every living being is intelligent, but they keep their intelligence till they're feeding, they're protecting their own life. Human being, in case of a human being, it started with that, but it has reached to some extreme heights. तो वो एक्सट्रीम हाइट जानने के लिए सिर्फ 50-60 लाख से साइंस की टाइमलाइन शुरू होती है. और ये अगर मैं आपको पढ़ने बोल दूंगा तो 101% यू विल बी अनहैप्पी. आई नो, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बट पढ़ना लिखना हमको पसंद नहीं होता है, इसलिए हम लोग कान में हेडफोन डाल के दिन भर बैठे रहते. दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट, मतलब वन ऑफ द सबसे बुरी आदत है. अभी मैं बोलूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, सर की तरह बात कर रहे हो, टीचर्स की तरह बात कर रहे हो, पेरेंट्स की तरह बात कर रहे हो, बट बड़े वही चीज बताते हैं जो आपके भविष्य के लिए अच्छी है. वर्ड इंडिया एंड साइंस टाइमलाइन ऑफ वर्ड की बात करें तो आप यहां देख सकते हो, हमने शुरुआत थोड़ी वर्ड से की. 3000 BC में कहीं मेजरमेंट का यूनिट का शुरुआत हुआ. 2100 में कहीं बेबीलोनियंस ने क्ले के टैबलेट बनाए, वॉल्यूम मेजरमेंट की शुरुआत की. आगे चलते चलते BC 2000 में ही कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो पुराने बेबीलोनियन सभ्यता ने इंट्रोड्यूस किए थे वो आए. पाइथागोरस का पीरियड वो नहीं है, वो तकरीबन 500 BC. तो यहां हम बात कर रहे हैं 2000 BC. 1800 BCE मतलब आज से 3800 यानी 3800 years or 4000 years is the period, Vedic period of. Though I'm talking about word, but touching upon Indian subcontinent also, just to make you feel that whatever India have in a documentive form is of this. If you go even 1000 years before that, you have Mohenjo-daro and Harappa. We may touch upon that. But suppose we go below 700 BC, you have Buddhayana from India, who is working on a Hindu Sulabha Sustras in Upanishads. 600 to 200 BCE, Sushrut and his Ayurveda, we know, his various surgeries, we know. If you talk about that long period, then it is the period which had been taken education from him and the knowledge was propagating. Now let's go further. Just imagine India's science. मुझे मालूम है आप बोलोगे 60,000 BCE से पहले ही इंडिया में हैबिटेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग शुरू हुआ था. बट नो, आई विल नॉट एग्री. मैं आप बोलोगे सर आपने ही लिखा है, आप एग्री नहीं करोगे. अभी आप भी एग्री नहीं करोगे. यू नो दिस इज लोनार लेक. नाउ डोंट आस्क मी वेयर इट इज. इट इज जस्ट 400 किलोमीटर्स फ्रॉम माय प्लेस वेयर आई एम सिटिंग. तो आपको मेरे घर आना है. दिस इज इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू. You can come to my place. We will go to Lonar Lake and see the beautiful crater which has been manufactured, built, or at least impacted crater formed 5.5 lakhs years. मतलब 5.5-6 लाख साल पहले ये बना. अभी इंडिया में बना तो ये इंडिया के टाइमलाइन में आता है. Then we can go further and we can tell कि 60,000 BCE ये था, 7,000 BCE ये था. तो 7,000, 5,000 BCE we had Mohenjo-daro, Harappa. 5,500 कॉटन का बात करते थे. And so many timelines up to invasion of Aryas. If we go to the real time astronomy or Vedic period is the starting. 1800 BCE means 3800 years from now approximately gives you the documentary evidence. What I am trying to tell you is of Vedanga Jyotish, which tells you about the astronomy, arithmetic, mathematics, and so many other things which are related to the timekeeping. This timekeeping comes from where? This timekeeping comes from the celestial bodies. What are the celestial bodies or Jyotis? Vedanga Jyotish name has got inclusive of all these things. Vedanga, Vedon का अंग, मतलब वैदिक पीरियड में बने हुए कुछ श्लोकास. ज्योतिष is not about राशि भविष्य which we keep pre-assuming. It's about जो भी celestial ज्योति है, सूरज, सन, चंद्रमा, मून, the planetary bodies, wanderers जिनको बोला जाता है, the constellations, उन्हीं को हम हमारी भाषा में, सभ्यता में नक्षत्रास बोलते. These all are useful in a time keeping.
This timekeeping is helping us since those 4,500 years, 5,000 years to understand the period of rainy season, so the period of harvesting, so the after harvesting, suppose you get free time, that's the time of celebration, later got converted to the religious functions, and so many other things. Like if you want me to connect this to the some period area of Egypt and Europe, then they used to think that whenever Leo constellation, Sinha राशि, Sinha constellation, आसमान में XYZ जगह पे आता था, तो नाइल रिवर जो है उसमें इतनी बाढ़ आ जाती थी कि लोगों को आसपास के बचना मुश्किल हो जाता. So you understand, it's not only about the timekeeping related to the season or timekeeping related to the harvesting or agriculture. It is timekeeping related to the every natural calamity which these ancestors were thinking of utmost importance. जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवेंट हुआ तो हम आगे बढ़े, ये बताने की जरूरत है. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इनोवेटिव and draw inspiration from Indian history. What is it? If you talk about 499 AD, अब तक हम जो बात कर रहे थे चरवाका, सुश्रुता, इन सब की, चरका, सुश्रुता और सब की, ये सब लोग BC, जीरो के पहले के थे. जीरो के बाद में 500 साल की बात करें तो आर्यभट्ट has given so many things talking about the mathematics, astronomy. Very important thing is a heliocentric model, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत of our Suryamala. This has been told 500 AD, and 1610 Galileo proved it with the help of Copernicus theory, which Copernicus proposed in the 15th century. 1000 years of gap. यहाँ आप सब बच्चों को, टीचर्स को जरूर सोचना है, why this gap called communication gap. मैं आज अगर कुछ छोटा सा काम करूं और मैं सबको अच्छे से समझा दूं, तो उसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर मंजिलें बिल्ट होती जाएंगी. ये कहीं इंडिया में मिसिंग था. डोंट बॉदर, इंडिया में नहीं, कई जगह मिसिंग था, डेवलप कंट्रीज में भी मिसिंग था. ये हम जाएंगे आगे तो बात करेंगे. टेम्पररी वी विल टॉक. इफ इट्स आर्यभट्टा, 628 AD ब्रह्मगुप्ता, देन 629 भास्करा वन, देन वराह मिहिरा. So many people have given so many Aryabhatiya, Goladhyaya, and so many books are existing with a really wonderful mathematical and astronomical calculation, which are having some errors which exist because of the precisional movement of the earth's axis. अब ये precisional movement क्या है? तो ये जो अर्थ का एक्सिस है, पोल स्टार है, जो भाई फिक्स्ड है, वो फिक्स नहीं है. वो तकरीबन 26,000 साल के एक छोटे सर्कल में घूमता है, और उसमें अगर आज हम पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा को, पोलैरिस को ध्रुव तारा मानते हैं, पोल स्टार मानते हैं, तो 7000 के बाद अल्ट्रामीन होगा, 12,000 के बाद शायद वेगा होगा, और 4-5 हजार साल पहले थुबान था, जिसके डायरेक्शन में पिरामिड के ओपनिंग विंडोज है. तो ये सारी जानकारी अगर आपको मालूम है, तो रिसेंट में 1500वीं सदी में, मैं यहाँ नाम लिखा है नीलकंठ जी, उन्होंने केरला स्कूल में ये आर्यभट्टा और उसके जो मॉडल्स है उनका स्टडी किया. टू द बेस्ट ऑफ द रिसेंट एक्सटेंट दैट किंग्स वर आल्सो इन्वॉल्व. बड़े बड़े राजा महाराजा भी हिंदुस्तान के काफी बड़े ज्ञानी और एस्ट्रोनॉमर थे. जैसे मैं बात करूं सवाई जयसिंह टू की. ही बॉर्न इन 1688. 1724 से 35 में उन्होंने जो हिंदुस्तान में किया, वो उस जमाने में मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशंस में भी नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट द जंतर मंतर, फिजिकल ऑब्जर्वेशनल साइट फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स एंड कैलकुलेशन, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज करके नाम दे दिया. बट ना ही हम लूनार लेक जाते हैं, और ना ही हम आज जंतर मंतर जाते हैं, ना ही आसमान की खुली किताब जिसमें तारे कॉन्स्टिलेशन भरे पड़े उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेते. तो आज का हमारा लेक्चर एक्चुअली इसलिए है कि आप फिजिकल इंटरेक्शन से या डिस्कशन से इसी तरीके से आप कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करें और आपके इनोवेटिव होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहें. तो मैं यहाँ मोबाइल पे बैठा हूँ, आप अपने मोबाइल पे या आपके कॉमन रूम में बैठे हो जो स्मार्ट रूम है, बट मैं आपके सामने फिजिकली खड़ा नहीं हूं, तो पहला इंटेंट ठीक से सेटिस्फाई नहीं हो पाया. बट जो मैं बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस मेनी ऑब्जर्वेशंस व्हिच आई टोल्ड यू आर रिलेटेड टू द बुक ऑफ आवर यूनिवर्स विच इज ओपन टू यू. आपके पास भी ये किताब खुली है, आपके यहाँ भी आसमान है,
उसमें आप ये सारी चीजें देख सकते हो। तो पहले चलेंगे ये ब्यूटीफुल साइट्स में जिनको मैं जंतर मंतर बोल रहा हूँ। ये सारे वो शैडो की घड़ी है जो मूव होती है ऑलमोस्ट 2 सेकंड में 1 मिलीमीटर, मतलब 60 मिनट का हिसाब तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है। और इतना छोटा लिस्ट काउंट वाला घड़ी अगर अपने यहाँ 300 साल पहले किसी राजा ने बनाया, तो जो मैथमेटिशियंस होंगे जो उनके साल पहले कई साल थे जिनसे प्रेरणा लेके बनाया, तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एग्जिस्ट इन आवर सिविलाइजेशन। This all calculations were not based on some philosophy. They were based on the actual understanding of celestial equator, ecliptic and north galactic poles, so many other things. तो ये जंतर मंतर जयपुर की ऑब्जर्वेटरी है जहां विराट सम्राट यंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा इस तरीके का अजूबा जो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन और टाइम कीपिंग में मदद करता है। ये इसका फोटो। इफ यू गो फर्दर, दिस आर एट उज्जैन, वाराणसी। मथुरा वाला जो है उसको डैमेज किया गया इन द 1857 मीटिंग, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन सिमिलर लाइन। Some other things exist which you can read on internet, because this lecture is to actually ignite your mind to start some journey in direction which is your of utmost interest. तो यहाँ एजुकेशन का रोल इन साइंटिफिक टेम्पर बात करेंगे। इवॉल्व माइंड्स और इनोवेशन इज यूजफुल टू द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। हम जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे अजय सर, अगर आप एग्जिस्ट सॉरी आप यहाँ है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कितने मिनट और मेरे पास है। प्लीज कंटिन्यू सर, वी आर नहीं एंजॉयिंग। नहीं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। You can go for 10 minutes. Yes, thank you so much. Because we want some students to ask some questions also. Yes sir, yes. So suppose this is what I'm trying to tell you. Human knowledge about universe, you go to the internet, probably you'll find some beautiful picture with some arm of our own Milky Way galaxy. This may be there. You know what is this? This is some crap nebula. What is it? एक आज से 1000 साल पहले पकड़िए, मतलब 1054 AD में 4 जुलाई को स्पेसिफिकली एक तारा आसमान में लास्ट स्टेज पे था, मरने की कतार पे था और मर गया। मरने के बाद वो ऐसे ही नहीं मरा, उसने मरते वक्त अपना अस्तित्व पृथ्वीवासियों को दिखा दिया। अभी इस बारे में एक महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नारळीकर विश्व उनके अपने एक आर्टिकल में थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि जब ये चाइनीज सिविलाइजेशन को दिखा तो भाई इंडियंस को क्यों नहीं दिखा, यूरोपियंस को क्यों नहीं दिखा, सदर्न अमेरिकन को क्यों नहीं दिखा, जापानीज को क्यों नहीं दिखा, ये सब क्यों नहीं दिखे। इसके ऊपर जब वो बात करते हैं तो वो फिर से घुमा फिरा के आते कि जिस वैज्ञानिक सोच पे हम बात कर रहे हैं वो उस जमाने में इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी रिलीजियस बायसेस को कि गैलीलियो हैड लॉट ऑफ ट्रबल इन टेलिंग समथिंग साइंटिफिक रिलेटेड टू द एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। तो उनके 300-400 साल पहले जब ये सुपरनोवा के फॉर्म में दिन में दूसरा ट्विंकलिंग स्टार लाइक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो इफ यू हैड रिस्ट्रिक्शन, यूरोप डिड नॉट मेंशन इट बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस ऑफ सच एग्जिस्टेंस इन एनी ऑफ द रिलेटेड रिलेवेंट रिलीजियस बुक। इंडिया की बात करें तो लगता तो नहीं है कि अपने यहाँ इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन थे, बट इसकी नोटिंग नहीं है, मतलब हो सकता है चाइनीज सिविलाइजेशन ने इसके नोटिंग किए तो वो कोई बहुत ही साइंटिफिक माइंडेड थे, ऐसा नहीं। यहाँ एक गलत फहमी थी जो उनका फायदा कर गई, और वो थी कि वहां के एम्परर को लगता था कि आसमान से उसको कुछ ना कुछ हमेशा संदेश मिलता रहता है, तो वो संदेश वो कहीं तारों में कहीं इक्लिप्स में ढूंढते थे। सो ही हैड अपॉइंटेड बाकायदा वन टीम टू टेल हिम द एनीथिंग हैपनिंग अनयूजुअल इन द स्काई। और उसी के चलते जब ये चीज देखी गई तो वो उसको दिखाई गई, बाकायदा डॉक्यूमेंट की गई, और डॉक्यूमेंट की हुई चीज के आज के एविडेंस बताते हैं कि दैट इज द M1 मेसियर ऑब्जेक्ट 1, जिसको क्रैब नेबुला बोलते हैं। देख सकते हैं आप चित्र कैसा दिखता है, क्रैब की तरह दिखता है। तो ये क्रैब नेबुला उस जमाने में लोगों ने नेकेड आई से देखा, बट आज अगर आप टेलीस्कोप का इस्तेमाल करोगे तो सुनहरा दिखता है। आज हम यूनिवर्स को बहुत एंगल से, कहीं एक्सरे से, कहीं माइक्रोवेव से, कहीं अल्ट्रासोनिक वेव से देख रहे हैं, ऑप्टिकल में भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से देख रहे हैं, कहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा जा रहा है, कभी जेम्स पार्कर सोलार प्रोब भेजा जा रहा है। ये सब चलते यू विल बी शॉक टू नो आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अटके हुए हैं।
जो इन प्लानिटरी बॉडीज की अंगूठी और ताबीज पहनते हैं। ये सिर्फ भारत में नहीं होता है, पूरे दुनिया भर में गलतफहमियों की बाढ़ आ चुकी है। यू नो हाउ दे कनेक्टेड, दे से इट्स न्यूटन्स लॉ। अगर समुद्र के पानी में हाई टाइड लो टाइड मून और सन से आता है, तो हमारे शरीर में जो 5-5.5 लीटर ब्लड है, उसमें भी तो कभी तो हाई टाइड लो टाइड आता होगा। अरे मान लो भाई पूर्णमासी के मतलब फुल मून न्यू मून को नहीं आता होगा, तो शनि जुपिटर की वजह से तो आता होगा। सो व्हेन यू कनेक्ट रियली टू ऑल दिस साइंस, इट इज कॉल्ड स्यूडो साइंस, छद्म विज्ञान, जो टोटली इलॉजिकल इरेशनल है। बट अगर इन लोगों के साथ हमें ये बनना है, तो जस्ट इमेजिन करिए बैठे बैठे मस्ती में कि आपने इनके साइज के हिसाब से, न्यूटन लॉ के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से, क्या है न्यूटन लॉ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज F is equal to G into m1 m2 by r square. G is a gravitational constant, m1 m2 are the masses, r is the distance between them. G जो gravitational constant है वो 6.67 into 10⁻⁻11 m के यूनिट है पृथ्वी अर्थवासियों की। अभी मुझे बताएं, तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इस प्रपोर्शन में, इन बुध है 4880 किलोमीटर डायमीटर, वीनस 12000 किलोमीटर डायमीटर, पृथ्वी 12500 किलोमीटर डायमीटर, मार्स 6-6.5 किलोमीटर डायमीटर, ये जुपिटर है। इसमें तो मतलब यूरेनस नेपच्यून में 20-40 पृथ्वी, शनि में 700-750 पृथ्वी, जुपिटर में 1300 पृथ्वी रह सकती है। इनकी अंगूठी ताबीज पहनोगे तो हाथ पांव की उंगलियां भर जाएंगी, शायद झड़ भी जाएंगी। नाउ जस्ट इमेजिन दिस आर द डिस्टेंसेस, आर भी है ना उसमें, तो ये डिस्टेंस भी पहचान लो, इसके ऊपर डिटेल में कभी फुर्सत में बात करेंगे। अभी देखिए ये सूरज, इफ यू कंपेयर सन विद दिस ऑल बॉडीज, देन यू विल बी शॉक्ड टू नो सन कैन अकोमोडेट 10 लाख अर्थ, और इनकी अंगूठी ताबीज पहननी है तो शायद ट्रैक्टर का टायर पहनना पड़ेगा। सो इसमें मुझे माफ कर दो, आप भी खुद को माफ कर दो, बट जिंदगी में ये रास्ते पे कभी नहीं चलना है, कि नहीं तो आपका एपिसोड क्राइम पेट्रोल पे आ जाएगा, भूलना मत। माइक माइक मैडम, हाँ। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमने इस आसमान के बारे में देखते हुए बहुत सारी चीजें की, लेट्स गेट टू द इंटरेस्टिंग फैक्ट। इफ सन इज विजिबल इन अ डे टाइम एंड सपोज नाइट टाइम सो मेनी स्टार्स आर विजिबल, डे टाइम कभी कभी सुपरनोवे दिखते हैं, आपने अभी तक नहीं दिखा, हम मरने के पहले दिख जाएगा ऐसी उम्मीद है, बट शायद वो लुभावना नहीं होगा, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। विल डिस्कस दैट अदर टाइम। सो ये जो सूरज आपको दिख रहा है, इसमें 10 लाख अपडेट हो सकती है, इसके साथ मैडम माइक मैडम प्लीज स्विच ऑफ म्यूट करो असीम खान। आप लोग इस तरीके से मस्ती नहीं कर सकते, प्लीज कॉशियस। मुझे 10 मिनट ही दिए हैं सर ने, प्लीज नाउ लिसन। इफ डे टाइम वी सी सन एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर्स डिस्टेंस, बट इट इज नॉट अलाउइंग एनी अदर ऑब्जेक्ट टू बी सीन बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी। बट रात को जो तारे संतोष सर आपका म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी, थैंक यू सर, थैंक यू। कितना मिनट हुआ? या ओके। सो नाउ वी विल डू वन थिंग। I was talking to you about sun. Let's go into the other stars, which are quite bigger than sun, and accommodating their ring or taviz is impossible. Now, these all stars, which I'm showing 5-6 in night sky, you can see almost 5-6,000 stars with your naked eye, in case the sky conditions are good and eye condition is good. So let's go further. Here, the Betelgeuse Centaurus can accommodate crores of sun. VY Canis Majoris can accommodate billions of sun. So let's go and understand where all they live. They live in some place called Milky Way galaxy. This galaxy is not in housing some 2-3 solar system. It is in housing approximately 100 to 200 billion solar system. Now you may ask me, sir, what is the diameter then? But beforehand, just see. This yellow spot is not sun, because similarly 100-200 billion solar system are existing in this blue circle. And suppose I want to measure the diameter of this Milky Way galaxy, then you will surely say me, sir, don't use motorcycle, it will be really cumbersome, because motorcycle will not cross speed of 40-50 kilometers per hour. तो मैं अगर ट्रेन लूं तो मैं 100-150 किलोमीटर जाऊंगा, अगर मैं हवाई जहाज लूं तो 1000-1500 किलोमीटर एक घंटे में जाऊंगा, अगर मैं स्पेस शटल सिस्टम लूं देन आई विल मूव अराउंड
60 to 70,000 kilometers per hour, which comes out to be 16 to 17 kilometers per second, which is much lesser than the actual speed of light, which is 3 lakhs kilometers per second. So I decided that I will use light, which has got tremendous speed of 3 lakhs kilometers per second, which can go around complete Earth in a 7 times or 7.5 times in a 1 second. So I put up light at the one diametrical point of this Milky Way galaxy, and I told this light to go through this diameter and please meet on an end point, so that I can calculate the time taken or at least distance taken. So ये टाइम डिस्टेंस में लाइट को जब मैंने बोला कि भाई पूरा डायमीटर दौड़ के जाओ, तो लाइट को 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितना समय लगा पूछा. You all are intelligent, you know the answer. But then many of the other schools replied saying 5 मिनट, 5 सेकंड, 5 घंटा, 500 घंटा, like that. Or somebody said even 50 years. Somebody said even 5,000 years. But the all were wrong, because the distance for light to cover this diameter is 1 lakh light years. 1 lakh light years in kilometer is 1 lakh into 365 into 24 into 60 into 60 into 3 lakhs. 1 with 18 zeros. एक के ऊपर 18 जीरो देने से जो बनेगा उतना डायमीटर इस मिल्की वे गैलेक्सी का है किलोमीटर में. तो आप बोलोगे एक ही है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है. छोटा हो गया स्क्रीन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसको बड़ा करता हूं, मेरे एक हाथ में मोबाइल है. दिस इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी. दिस डज नॉट हैव 100 200 बिलियन गैलेक्सी बिलियन सोलर सिस्टम. इट हैज गॉट 300 to 400 billion solar system. Diameter is not 1 lakh light year. Diameter is 1 lakh 80,000 light year. This is something which is not galaxy. This is the, every point is a galaxy. So if you ask me, Andromeda, Milky Way, how many galaxies are there? So this is one picture which is saying that this particular galaxy, this particular picture is the picture taken by Hubble Space Telescope of some sky portion where you have every point as a galaxy. So you may be interested in seeing which is our galaxy. Let's get into this. So see, suppose, just imagine, bottom one is a Milky Way galaxy, top one is a Andromeda galaxy. Bottom one has got diameter of 1 lakh light year, upper one has got diameter of 1 lakh 80,000 light year. The distance between two galaxy is 22 lakhs light year. इन दो बिंदुओं के बीच में 22 लाख प्रकाश वर्ष की अगर दूरी है, तो यू मे आस्क मी, सर व्हाट इज दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट. तो मैं बोलूंगा दिस इज द पिक्चर ऑफ नॉट कंप्लीट स्काई. दिस इज अ पिक्चर ऑफ द स्काई पोर्शन which can hide behind 1/10 part of the full moon. चलो स्लो फिर से बोलता हूँ. If you take full moon, you divide into the 10 equal parts, take one part, put it in the sky, allows Hubble Space Telescope to concentrate on that one small portion, 1/10 portion of the moon, and remove that moon portion, so that now it will see the sky behind that moon portion. Then what Hubble Space Telescope will see is this. 1/10 of the moon is hiding sky, which has got 3,000 plus galaxies. Then you may ask me curiously, how many galaxies exist in a whole sky? I will say 100 to 200 billion galaxies. You will say this is whole of universe. Then I will say no. The whole of universe is just what you can say. This particular 100 200 billion galaxy is a 5% visible matter of this universe. 95% is a dark matter and dark energy. So we live in a such vast universe that is being identified, discovered by the small brain of human being by his own efforts, developing technology through the natural resources, and nothing in a supernatural form has helped him, and nothing in a supernatural form has troubled him. Everything is natural, whether it's a meteoritic impact or whether it is availability of natural resources in some very, very important earth element. So all these things are possible only if you start working hard. Today's date, we see that India is lacking too much into the innovation. All innovative students sitting here should understand that to inculcate innovation spirit, to add something to the humanity and nation, and to start doing something on own, you need to have proper thinking. One element is scientific thinking, other element is hard work, third element is a guidance.
So in this reference, suppose just I want to brush upon where science, technology, and scientific thinking has taken human beings. If you talk about medical science, few years back, after biting of the snake, human being is to die. 2 years back, I got one strong viper bite. I was almost in some dead mountain. I traveled for 2-3 hours, but still alive and delivering lecture because antivenom exists. This has come from science and technology. If you talk about the blood transfusion, let me tell you, even taking blood from the other was some miracle in few years back. If you read the history of blood and blood usage, then probably you will understand it was not so easy. Attempts were made to take blood from other human beings, but they could not succeed because they were not knowing that there are some groups in the blood. If you talk about today's growth, the pig's heart was transplanted to the human 1-2 months back, and that human being is still alive and functioning well. If you talk 2-3 years back, 2017, head transplant operations have started in Italy by some team of scientists. And if you talk about the corona vaccine, in the just 2 years of pandemic, almost 50 to 40% of world is vaccinated, which is impossible anyway if you go 50 years even back from now. Astronomy की बात करें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप या पार्कर सोलर प्रोब, which is working in the temperature of few lakhs degree with the help of one small insulation of carbon element, thin insulation in few millimeters. So that is something miraculous. Hubble Space Telescope is now about to be replaced by James Webb Telescope, जिसके पीछे एक्सपेंसेस थे 70 से 80 हजार करोड़. काम किया गया approximately 20 से 25 साल. If you talk about nuclear science and technology, separate lecture can be delivered because I am nuclear scientist. So today, if you talk about the cancer treatment, you talk about the retentions of the food product, like sprouting of the potatoes and onions, ये सब कम करने का काम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी करती है. कैंसर ट्रीटमेंट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं. देश को अखंड और दुनिया से बचाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अलावा कोई मदद नहीं. ये सारी चीजें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग करते हैं बिकॉज वी हैव गॉट सम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी given by the people working on the border. Those are our armed forces. So though you respect scientists, teachers, engineers, doctors, but don't forget that you should first respect the armed forces. If we talk about the space probes and applications, I already listed Parker probe, James Webb Telescope. These are really, really wonderful examples. But if you talk of India's contribution, then Chandrayaan 1, 2, Mars Orbiter mission, or if you talk about the GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope, world's biggest radio telescope is in India. If you talk about other things, the time will be really, really impossible to connect. Just don't forget कि मैं आपको यहाँ क्या दिखा रहा हूँ. सैटर्न का जब ऑब्जर्वेशन गैलीलियो ने किया तो पहला चित्र, जब उसका इम्प्रूव्ड वर्जन 1616 में किसी ने देखा तो वो अलग था. 1655 Huygens observed it is like minutely ring structure. Cassini gave in 1677, this is probably rings. So when you talk about the science, technology, innovations, everything, please don't forget that it will not come 100% correct at first attempt, but you will be successful at some attempt. So keep trying. This lecture was told me to deliver just to act as a mentor. So I personally feel that children are great imitators. मैं आपको ये सारी चीजें ये बताई कि आपको अगर पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए लेक्चर में थे. इफ यू टॉक कि मैं आपको इतना सारा साइंस टेक्नोलॉजी छोड़ के इथिक्स पे संस्कार पे क्यों बोला, आई जस्ट वांटेड टू रिपेयर और एटलीस्ट ग्रूम यू टू द प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, गुड ह्यूमन बीइंग, करेक्ट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट इज ऑलवेज इजी टू रिपेयर चाइल्ड एंड अडल्ट. क्योंकि एक बार संस्कार दिमाग में बैठ गए फिर कितना भी विज्ञान बोलो लोगों को समझ में नहीं आता. ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये पार्कर सोलर प्रोब है, इतने हाई टेम्परेचर पे वो काम करता है. नाउ मुझे सर ने बोला कि चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम दी व्हाट यू आर दैन व्हाट यू टीच. तो मैंने इतना जो 1 घंटा बोला, इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने बारे में कुछ बोलूं. मैंने इसके लिए एक ऑप्शन चूज किया है. आई लव विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट, आई लव विजिटिंग JNV, and sir knows, Suresh sir knows it very well. So whenever I get first holiday, I will visit your place. I'll meet you all and I will discuss all the things
Today, I must stop here, or else it will be indiscipline from my end. So I just want to stop here with thank you, very big thank you to all of you. And in case I have done some or said something wrong, kindly accept my apologies. Sir, it's over to you. Thank you so much. This is my WhatsApp number for those who want to be in touch with me. Accept apologies, and sir, please continue. Thank you so much. Thank you, Dr. Santosh. Uh, and before I call DC sir, I request all JNVs to please turn on the video so that we can see the students at least once. We have, yes, and please mute also if some other JNVs like, because now we want to take some questions also. So first I request DC sir to say a few words about the session, and Santosh sir, and then we will take some questions from students. Over to DC sir. Okay, thank you. Thank you, Ajay. Thank you, sir. My sincere thanks goes to Dr. Santosh Takale, and he is very closely associated with the Navodaya system across the country. He is an inspirer so far as the Navodaya system is concerned, and he has been visiting Vidyalayas to Vidyalayas and delivering lectures online and offline, and supporting in the development of creating a scientific environment and awareness among the younger generation. This is something great. And since we are located in a remote part of the country, we cannot access the great institutions. And when we were in the other regions, and we were able to send our children to various institutions and invite the scientists and associating with various great institutions, research institutions in Pune, Bombay, Chennai, Hyderabad, Bangalore, and all. And unfortunately, we don't have that much exposure possibility over here. So that is why when we were thinking about the organizing the science regional science congress, we thought what should be the mode. That was our first thought. And then they pointed out that there are some cases in some states, so they are having still the cases of COVID, and therefore bringing the children from all the 8 states to a common platform and getting the facilities, arranging it will be little difficult in the present situation. So therefore, we thought of going for online. And who should be the person who should inaugurate and start with? And immediately in my mind, the name came. And even I too have so many of my children working in various organizations.